So I'm a pediatrician, child specialist. I have pursued my post graduation from Maharaja Sayajirao University. I'm basically from Gandhinagar, Gujarat. So I was awarded with gold medal from my university for good performance in my post graduation. And basically, I am practicing at my clinic. My clinic's name is Tatvan Children Clinic. I have various attachment with corporate hospitals at Ahmedabad. Now, basically, my passion is to bring awareness in parents regarding their kids' health. So, basically, I think that our body is something which has a self healing property. So, if not taken care in a particular time, it can produce a disease. So, better to have a holistic care of a child. So, I am there on various social media platforms on Instagram, on Facebook with my clinic's name, Tatvan Children Clinic. So, where we are creating awareness videos for kids, their parents, especially teenagers, so that they can have an overall improvement in their health. So, basically, I would like to thank Baby Chakra platform for discussing this topic, which is very much hot. Today's topic is cough and cold in kids. So after this winter season is on, since last 2 days there are very much fluctuation in temperature. So with this winter season and with the changing waves of COVID, now we are in third wave, just at the third wave of COVID. सो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को सर्दी हो गई, हमारे बच्चे को बहुत स्नीजिंग आ रहा है, बहुत खांसी हो रही है, कोल्ड है, ठंड लग गई है. बेसिकली इफ दे आर नॉट एबल टू एलाबोरेट तो दे से कि ठंड लग गई है, बच्चे को जुकाम हो गया है. सो एक्चुअली ये है क्या? सो कफ एंड कोल्ड वेरी कॉमन एंड वेरी ब्रॉड प्रॉब्लम. So initially, before COVID, we used to find out lots of children. Whenever I used to go to take the rounds, I was finding so many kids with pneumonia because pneumonia is something which is lung infection. So initially, वो भी cough and cold की तरह ही present होता है. So parents used to neglect that, and a child kids will be ended up in pneumonia, very severe disease, may require oxygen. So initially it was like that. Since last 2 years, because of our media, because of Google searches and all this, parents are very aware, and that is a good thing also. But yeah, there are some negative effects of that also. So अभी क्या होता है घर में, हाँ छींक, किसी ने एक छींक खा लिया तो दे आर लाइक वेरी मच वरीड कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया, बच्चे को ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया. Even though parents themselves are suffered from COVID, but they are very much sensitive for kids. So yeah, it's a good to have awareness, but it's not good to be very much panic about that. So अगर आप very much panic हैं, आपने 2 3 4 दवाइयां दे दी सर्दी खांसी की, so that can have its own side effects. So let's discuss. और सबका क्वेश्चन होता है कि होता क्यों है. सो बेसिकली लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज कोई कंट्री पे अटैक होता है, जैसे नेबरिंग कोई कंट्री ने अटैक किया है. सो वो बॉर्डर थी, दो कंट्री के बीच की बॉर्डर थी, वहां पे थोड़े सोल्जर्स थे, देयर वाज अ पेट्रोलिंग ऑन गोइंग, वहां पे पहरा रहता था, देयर वाज एवरीथिंग वाज फाइन. सो वैसे ही हमारा बॉडी है, हमारी इम्यूनिटी है, एट पीस है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. सो सपोज ऑन वेरी फाइन डे अटैक हो गया कंट्री के ऊपर, तो बॉडी के ऊपर फॉर एन एग्जांपल बच्चे के सांस में आ गया या नाक कान गले से इन्फेक्शन हो गया. सो इट कुड बी एनीथिंग, इन्फेक्शन, एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, इवन अ कोल्ड विंड. सो एनीथिंग विच इज नॉट सूटिंग टू बेबीज बॉडी. तो बच्चे के बॉडी के लिए वो चीज फॉरेन है, बाहर की चीज है. सो जैसे कंट्री वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज गुड, अभी बाहर की कंट्री ने अटैक किया है. ओके, सो दैट इज अवर प्रॉब्लमेटिक थिंग. सो कंट्री क्या करेगी, अपनी पूरे कंट्री की आर्मी वहां बॉर्डर पे ला देगी. सो सेम थिंग, अपनी पूरी इम्यूनिटी आ जाती है लंग्स के जगह पे, नोज, थ्रोट में. ओके, सो नॉर्मली नाक नहीं बैठती है, नाक बंद नहीं होती है, बच्चे खांसी तो करे नहीं है पूरा दिन. सो अगर ये सिम्टम्स शुरू हुए हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग अनयूजुअल, समथिंग फॉरेन इन द बॉडी, कुछ बाहर का प्रॉब्लम आया है. अभी जैसे कि मैंने बोला, अवर बॉडी इज वेरी फाइन, वेरी ट्यून्ड, बहुत अच्छे से बनाया हुआ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. सो जैसे ये कुछ बाहर का चीज आया, बॉडी ने छींका, बॉडी ने खांसी किया, एंड दे ट्राई टू रिमूव दैट थिंग. सो एज सच इट्स अ गुड थिंग. पर जैसे मैं आपको कंट्री का एग्जांपल दिया, पूरे कंट्री के पुलिसमैन, पूरी कंट्री की आर्मी अगर बॉर्डर पे आ जाए
तो बाकी की जगह पे वीकनेस होगी। ओके, सो सेम थिंग, पूरा अगर आपके बॉडी का इम्यूनिटी इज टारगेटेड फॉर दिस कफ एंड कोल्ड, सो बच्चा वीक हो जाएगा। सेम टाइम बच्चे को दूसरे इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा थिंग, ये तो अच्छी बात है कि आर्मी कंट्री की बहुत ज्यादा यू कैन से पावरफुल है, बट व्हाट इफ इट्स अ वीक, या फिर अटैकिंग कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो क्या हुआ? उस केसेस में ये अटैकिंग कंट्री अपने वॉर में बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। सो सेम थिंग, अगर बच्चे का इम्यूनिटी कम है, बच्चे की इम्यूनिटी वो सामने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, देन इट कैन प्रोग्रेस एंड दैट कैन लीड टू वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। सो सर्दी जुकाम पहले 2-3 दिन यू कैन बी एट अ रेस्ट, कि ठीक है हम होम रेमेडीज करते हैं, सो दे आर नॉट एट ऑल बैड। जब दैट इज लाइक टू एजेड सॉर्ड, जैसे मतलब ऐसा है कि अगर वो सर्दी खांसी को आपने होम रेमेडीज दिया, टेम्पररी इट विल गिव अ कंफर्ट, बच्चा फाइन होगा, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट अगर आप देख रहे हैं कि तीसरे चौथे दिन बच्चे के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि पहले सिर्फ सर्दी खांसी था, अभी साथ में डायरिया वॉमिटिंग शुरू हो गया है, या फिर बच्चा रात को सो नहीं पाता है, सोने के बाद उठ जाता है बार बार, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, उसका खाना पीना बहुत कम हो गया है, that means something which is not able to be taken care by body's immunity. So ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी जैसे कि कोविड का है, सब लोग बहुत दे आर लाइक थिंकिंग कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो मतलब डॉक्टर के पास कैसे जाएं, वहां से इन्फेक्शंस लग गए तो। सो इनिशियली फिजिकल एग्जामिनेशन इज बेस्ट थिंग, वेन एवर यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर चेक करेंगे, स्टेथोस्कोप से देखेंगे कफ है कि नहीं, कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं, so that is a good thing. But what if आप initial stage पे you can consult on online platforms. I am also available for online consultation. So जो online consultation है वहाँ पे doctor is not examining the child. So आज मैं आपको बताऊंगी कि how to express the symptoms. Okay, वहाँ पे आप ही बच्चे के लिए स्टेथोस्कोप है, आप ही जिस हिसाब से symptoms बताएंगे उस हिसाब से आपके डॉक्टर दवाई देंगे। सो बेसिकली अगर आप बोलते हैं बच्चे को खांसी है, कफ है, कफ, so what kind of cough, doctor will secondly ask this question, कफ है, ओके, कितने दिनों से है, कैसे टाइप का कफ है। सो बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के कफ होते हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ। सूखी खांसी मतलब जस्ट ऐसा ऐसा खांसी आ रहा है, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज इन द थ्रोट और नोज, सो दैट विल बी इन द इनिशियल पीरियड। जैसे कोई भी इन्फेक्शन लगता है, नाक और गला अफेक्ट होता है, देन इट विल गो डीप इनटू द लंग्स। तो पहले ठीक है, सूखी खांसी है, कफिंग, ओके। सो अगर ये वेट कफ में कन्वर्ट हो जाता है, उस वो कैसे पहचाने, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर वेयर यू रिक्वायर द मेडिकेशन। सो कब, जो अगर आपका बच्चा खांसी करते करते वॉमिट करता है, ठीक है, खांसी करने के बाद उल्टी करता है और उसमें कफ निकलता है, जो चिकना कफ निकलता है, then it is something which is dangerous thing, so that you should tell कि खांसी के बाद उल्टी होती है, बच्चा सो जाता है तो भी छाती में से आवाज आता है, कफ का आवाज, गर्गिंग साउंड्स आते हैं, so that is also a serious symptom. थर्ड थिंग, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया है, फीवर पैरासीटामोल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फीवर के स्पाइक्स बढ़ते जाते हैं, एवरीथिंग यू शुड टेल योर डॉक्टर इन अ वेरी मच डिटेल्ड थिंग। ये हुआ एक बार सर्दी खांसी। अभी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स एवरी टाइम यू कैन से दे कम टू मीट मी इन एवरी ओकेजन, सो एवरी ओकेजन पे सेम कंप्लेंट, सर्दी खांसी, सर्दी खांसी, सर्दी खांसी। So why some kids are having a recurrent cough and cold? I guess lots of parents will be communicating with me that yeah, उनके बच्चों को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, आए दिन उनको सर्दी खांसी के लिए उनको डॉक्टर विजिट करना पड़ता है। तो व्हाट्स दैट रीजन? वन थिंग, जैसे मैंने आपको बोला, बॉडी का इम्यूनिटी, बॉडी का आर्मी ही वीक है, कंट्री का आर्मी ही वीक होगा तो एक नहीं 10 कंट्री उनके ऊपर अटैक कर सकती हैं। सो सेम थिंग, बॉडी का इम्यूनिटी कम है, बार बार आपके ऊपर दूसरे इन्फेक्शन, कभी एक वायरस कभी दूसरे वायरस, सबने इन्फेक्शन किया है तो बच्चे को सर्दी खांसी होगी। सेकेंड थिंग, अगर कोई बच्चों को वैसे ही अंडरवेट है, कोई हार्ट का बीमारी है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, देन ऑब्वियसली दैट नीड टू बी चेक। एंड थर्ड विच इज कॉमनेस्ट थिंग इज एलर्जिक प्रॉब्लम। ओके, एलर्जीज आपने बहुत बार सुना होगा, सो लेट मी टेल यू कि किस चीज की एलर्जी हो सकती है।
सो जैसे ठंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एवरी विंटर सीजन दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स, एवरी टाइम पेरेंट्स आर वेरी मच एप्रीहेंसिव, जैसे ही ठंड होना शुरू हो जाता है उनको गर्म कपड़े निकालने की जल्दी होती है कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। सो कोल्ड विंड जो गर्म ड्राई एयर होता है, सॉरी कोल्ड जो एयर होता है, द ड्राई एयर इज whenever the child breathes that air, that is the allergen to some of the kids. सेकंड कॉमनेस्ट है जो फूलों का पोलन होता है, बच्चे गार्डन में खेलते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एलर्जन वन ऑफ देम। डस्ट, कहीं डस्ट जगह है वो भी एलर्जिक रहती है। कुछ कुछ बच्चों को फूड की एलर्जी रहती है, जैसे पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव, एसेंस, ये सब एलर्जीज रहती हैं। सो इंडिविजुअल चाइल्ड का अलग अलग टाइप की एलर्जी के रहते हैं। सो हाउ टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग, जो बार बार सर्दी खांसी हो जाते हैं अभी के कोविड के टाइम में, luckily because of existing good immunity, kids are not so much affected, but how to maintain this immunity? So homemade cooked food खिलाना चाहिए, avoid junk foods। if आपके बच्चे जिद्दी हो चुके हैं, they are not taking any of homemade food, you need to find out the other ways how to cook interesting stuff at home and give them that food। second thing, avoid all दिस एलर्जीज, पर्टिकुलर जिस चीज की आपके बच्चे को एलर्जी है, जैसे ठंड में कोल्ड विंड की एलर्जी है, सो अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स, avoid the particular food allergies, and the last and important thing is vaccines। Okay, so vaccines, even though we do not have presently don't have a covid vaccine for small kids, but yes, we have a flu vaccines, pneumococcal vaccines, which are protecting against different kinds of virus and bacterial infections। so this is the one of the reason, like we are giving frequent vaccines to the kids, and that's why they are till now protected from the serious covid infections। Okay, so stay safe and stay healthy. So that was about my talk regarding awareness of cough and cold in the kids। So we can have a question answer session। Yeah, श्वेता जी पूछ रही हैं, उनका बेटा 3 मंथ का है। Yeah, so this is common, like with cough and cold, it can be something as I told you, थोड़ा बहुत डायरिया वॉमिटिंग रहता है। अगर ये बच्चा ग्रीन पॉटी करता है, कोई भी बच्चा ग्रीन पॉटी करता है, सो नो नीड टू वरी, इट इज कॉमन। वो बच्चे का थोड़ा गट एक्टिविटी ज्यादा होता है, सो इट्स कॉमन टू हैव अ ग्रीन पॉटी, नो नीड टू वरी। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। या डॉक्टर रश्मि। Yeah, so this is very much common to have a nose block। I told you, like nose block is very much common। So there is something called as a normal saline nasal drops। Okay, so it's a saline drops। So this saline drops are just something which are having a same like a body's saline। Okay, so whenever we got admitted, we take that saline in the hospital for dehydration and whatever the reasons, that saline is same like our body's water। so that saline is instilled in nose, so they are nasal drops, नाक में डालने के drops रहते हैं। so you can use that, you can use it very frequently, like before every feeding you can use that, before sleeping every night you can use that। so that normal saline nasal drops, they are something which are very safe, which are not to be given orally, they are nasal drops, नाक के drops हैं, so locally act करते हैं, body में कोई side effect नहीं होती है, तो that you can do। okay, what to do for cough which is not a dry cough? okay, so उषा जी पूछ रही हैं, डॉक्टर व्हाट टू डू फॉर द कफ विच इज अ ड्राई कफ एंड ही इज अनेबल टू ईट एनीथिंग। यस, इनिशियली जो 1-2 दिन होते हैं उसमें ड्राई कफ है, और आपको ऐसा है कि बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है, तो ये है थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, नोज और थ्रोट के इन्फेक्शन में या नोज और थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम होता है, सो इट विल प्रोड्यूस अ ड्राई कफ एंड यू कैन गिव लिक्विड्स। कुछ नहीं खा सकता है, नो इश्यूज, अ चाइल्ड विल बी टेकिंग लिक्विड्स डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक वार्म लिक्विड्स, यू कैन गिव अ सूप, यू कैन गिव अ जस्ट वार्म वाटर, you can give some like rice water, dal water, that you can try, and that will keep the throat warm and that will prevent the coughing also। and that's not like one katori at a time de diya, you have to give like 2 sips, then child can take a 5 minutes rest and then again।
So this time you need to give a proper attention to the liquid intake of the baby. So if not able to take solid foods, no worry, give a liquid. Yeah. So same again question. A nose block, baby is unable to breathe at night. What should I do? Yes. So this is common problem at night because kids, small kids like less than 6 months, they are obligatory nasal breather. मतलब वो बच्चे सिर्फ नाक से सांस लेते हैं. So रात को जैसे ह्यूमिडिटी कम रहता है, एकदम ड्राई एयर होता है. So it's common to have a nose block at night. Okay. So major question I have completed. Vitamin D deficiency that can decrease the immunity and that can have a recurrent cough and cold. So yes, that has to be corrected if someone is suffering from recurrent cough and cold. Okay. So thank you everyone. Take care everyone in this time. Stay at home and stay safe. Yeah, newborn care for cough and cold. Yes, this is very much tender age. If very much severe, you need to consult a doctor. If mild, nasal drops are good. So for newborn, before giving any oral medicine, you need to consult a pediatrician. But yes, you can give a nasal drops very well, that are not harmful. So for newborn, nasal drops will work well. I hope I have covered majority of question. Thank you everyone. It was nice to interact with all the beautiful moms here. Thank you.